Very good morning, dear students. Welcome back to e-learning classes of accountancy. I hope you all are fine and safe and doing good at your home. Today, in this lecture, I am going to start your chapter number 3 of Part A, Volume 1, that is Change in Profit Sharing Ratio of Existing Partner. Is it clear, beta? The topics which I am covering in this lecture is reconstitution of partnership firm, sacrificing ratio, and good gaining ratio. Today I will give you the introduction of this chapter so that you can understand ki what is this and what it contains. So beta, I am starting these two topics today, that is reconstitution of a partnership firm and sacrificing ratio and gaining ratio. Now see, what is reconstitution of a partnership firm? Partnership is the result of an agreement between persons for sharing the profit of a business. Any change in the partnership agreement brings to an end of existing agreement. So what is partnership, beta? Partnership is an agreement between two or more than two partners to carry on legal business with the purpose of profit motive. तो reconstitution of partnership firm means दोबारा से reconstitute करना this agreement. This agreement has been held according to Indian Partnership Act 1956, and if there is any change after the agreement, then the partnership reconstitute again so that we can have a new agreement among the partners of the firm. So partnership is the result of an agreement between persons for sharing profit of a business. Any change in partnership agreement brings to an end of existing agreement and a new agreement come into force. ठीक है बेटा, अगर कोई भी चेंज पार्टनरशिप एग्रीमेंट में होता है तो जो ओल्ड एग्रीमेंट है वो आपका क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है, न्यू एग्रीमेंट कम इनटू फोर्स. तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मे हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस. और रिकंस्टिट्यूशन किस किस केसेस में होता है? दीज केसेस आर नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर. जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनके बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन दे हैव स्टार्टेड बिजनेस, A and B are the partners of the firm. When they have started business, the profit sharing ratio was 1:1. Then after some time, they decided to share profit in the ratio 2:1. इट मीन्स जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था, और जब आगे उनका एग्रीमेंट उन्होंने डिसाइड करा कि दे शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, तो ये एग्रीमेंट में चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया. इट मीन्स आपका ओल्ड पार्टनरशिप वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी एंड देयर इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म. नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. जब हम किसी न्यू पार्टनर को बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए व्हेन वी आर एडमिटिंग एनी न्यू पार्टनर इन द फर्म, देन ऑल्सो देयर इज चेंज इन द एग्रीमेंट and change in the profit sharing ratio, and it is known as reconstitution of partnership firm. Number 3, retirement of an existing partner. If any existing partner retired from the firm, then also remaining partner will continue the business and the existing agreement will be discontinued and there is reconstitution of the partnership firm. Number 4, death of a partner. If any partner dies, then also remaining partner will continue the business and the old partnership came into end and new agreement will be there in the partners. Then amalgamation of two partnership firm. When two different partnership firm having same business amalgamate, और amalgamate का means join हो जाती है एक साथ और एक continue करती है अपना business, new business start करती है, that is called amalgamation. For example, A and B are the partners of firm 1, C and D are the partners of firm 2. A, B, C and D decided to run only one firm. So that is firm number 3 in which there are 4 partners A, B, C and D. So this is called amalgamation of partnership firm. Then also the old partnership agreement came into and new reconstitution of partnership firm is there. Now see beta, first topic, change in profit sharing ratio among the existing partners. Sometimes existing partners decide to change their profit sharing ratio, जो मैंने अभी आपको बताया था. That change is necessary due to change in capital formation or an active participant in the management. या तो capital formation change हो जाए दोनों partners के बीच में, या कोई एक partner ज़्यादा active हो in the firm, then also there is change in
profit sharing ratio of the partners. As a result of change in profit sharing ratio, one or more of the existing partners may require extra share in profit at the cost of one or more of the other partners. और जब ये profit sharing ratio change होता है तो किसी एक पार्टनर के पास ज़्यादा शेयर पहुंच जाता है प्रॉफिट का देन अदर पार्टनर, और इसके सो इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्विटी अमंग द पार्टनर्स देयर आर सम एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. और इसको इक्विटी को मेंटेन करने के लिए भी कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, चाहे वो पार्टनर आपका रिटायर हो रहा हो या आपका एडमिट हो रहा हो फॉर्म में. एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं ये? नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ sacrificing ratio and gaining ratio. Number 2, accounting treatment for goodwill. Number 3, accounting treatment of reserve and accumulated profit. Number 4, accounting for revaluation of assets and liabilities. And number 5, adjustment of capital. तो आप अभी आज टुडे आई विल कंप्लीट फर्स्ट टॉपिक दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, एंड नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल. Now see the first topic, sacrificing ratio. Whenever there is a change in profit sharing ratio, one or more of the existing partner have to surrender some of their old share in favor of one or more of the other partner. जब भी changes आते हैं profit sharing ratio में तो कोई एक partner अपना share surrender करता है in the favor of other partner. The ratio of surrender of profit sharing ratio is called sacrificing ratio. और जो partner surrender करता है अपना share to in favor of other partner, that ratio is called sacrificing ratio. And the formula of calculating sacrificing ratio is sacrificing ratio is equals to old ratio minus new ratio. The number 2 is gaining ratio. As a result of change in profit sharing ratio, one or more of the existing partner gain some portion of other partner's share of profit. The ratio of gain of profit sharing ratio is called गेनिंग रेशियो. और जैसे आपका एक पार्टनर सरेंडर करता है अपना शेयर इन फेवर ऑफ द अदर पार्टनर, इट मीन्स दैट अदर पार्टनर गेन करता है दैट पोर्शन ऑफ शेयर जो आपका पहला पार्टनर सरेंडर कर रहा है इन द फेवर ऑफ अदर पार्टनर. इट मीन्स एक पार्टनर तो सेक्रीफाइस कर रहा है तो दूसरा पार्टनर उसी शेयर को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है. सेक्रीफाइस मतलब सेल करना एंड गेन मतलब परचेज करना. तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है शेयर, सरेंडर कर रहा है अपना पोर्शन, तो उसका रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहलाएगा. और जो पार्टनर गेन कर रहा है दैट सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ अदर पार्टनर, इट इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो. The formula of calculating gaining ratio is equals to new ratio minus old ratio. Let's see one question, that is question number 1, so that you can understand how can we calculate sacrificing ratio and gaining ratio. X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:3. With effect from 1st April 2019, they agreed to share profit equally. Calculate the individual partner gain or sacrifice due to change in the ratio. X and Y दो partners थे, उनका profit sharing ratio was 5:3 था. जब उनका with effect from change in the ratio from 1st April 2019, they decided, they agreed to share profit equally agreed हो गए. तो calculate the individual partner gain or sacrifice due to change in ratio. Old ratio was 5:3 and new ratio is 1:1. See the solution beta. Old ratio of X and Y is equals to 5:3. New ratio of X and Y is equals to 1:1. Sacrifice और gaining ratio are X ratio, ओल्ड रेशियो, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटा. सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा रहे हैं ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और आंसर आपका अगर नेगेटिव में आता है तो वो उस पार्टनर का जिसका भी आंसर नेगेटिव में आ रहा है वो गेन करेगा. और अगर आप गेनिंग रेशियो के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, और किसी पार्टनर का आंसर नेगेटिव में आ जाता है, माइनस में आता है, तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा. यहाँ पे ओल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो एक्स का जो ओल्ड रेशियो था दैट वॉज 5/8 माइनस उसका जो न्यू रेशियो है एक्स का दैट इज 1/2. तो एक्स का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपने कर दिया, तो इसका जो आंसर है दैट इज 1/8. इट मीन्स ये आंसर क्या है, द रेशियो गिव्स पॉजिटिव वैल्यू दिया है, तो इट इज अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स. तो एक्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1/8. नाउ कैलकुलेट वाई रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो वाई का जो ओल्ड रेशियो था दैट वाज 3/8 और न्यू रेशियो उसका हो गया 1/2. तो वाई का रेशियो जो निकल कर आया, वाई गेनिंग माइनस का 1/8 आया, इट मीन्स वाई ने गेन करा. द रेशियो गिव्स नेगेटिव वैल्यू, सो इट इज़ अ गेनिंग रेशियो. तो ये कौन सा रेशियो आ गया आपका, गेनिंग रेशियो हो गया. दस एक्स हैज सेक्रीफाइस 1/8 शेयर वेयर एज वाई हैज़ गेन 1/8 शेयर.
ठीक है बेटा। तो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, जो ओल्ड रेशियो है उसमें से न्यू रेशियो को माइनस करिए और किसी पार्टनर का आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो वो पार्टनर गेन कर जाएगा, और न्यू रेशियो में से अगर ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं और किसी पार्टनर का आंसर माइनस में आ रहा है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। Is it clear? I hope you have understand. Two formulas I have explained. One is sacrificing ratio, old ratio minus new ratio. Second one is gaining ratio, new ratio minus old ratio. और इसके बेसिस में न्यूमेरिकल है. फर्स्ट ए मैंने सॉल्व कर दिया है. फर्स्ट बी, सेकेंड ए और सेकेंड बी इज योर होमवर्क. Thank you, beta. I hope you all have understand. Thank you, beta. Have a nice day.